जी स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. ओके। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लास्ट टाइम we were on this slide, we were discussing अभी भी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? जी विजिबल है, नज़र आ रही है स्क्रीन सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So last time we were discussing safety of machines. Okay. We had discussed that machine is an integral part of working environment. Uh, Normally किसी भी इंडस्ट्री में मशीनरीज जो हैं वो बड़ी ज़रूरी भी चीज़ हैं और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स हैं, और जहाँ पर ज़्यादा चांस होता है आपके किसी एक्सीडेंट के अकर होने का, राइट? सो हाउ टू make sure that the accidents are eliminated or at least minimized, ठीक है? तो उसके लिए different strategies थी which we have seen in the previous lecture. So now let's start further. Okay, so what is safety training? Safety training basically here means that safety training is the essential for preventing accidents and injuries in the workplace. Okay. So, safety training should be conducted regularly and updated as needed. Training should cover the purpose of machines, including safety procedures, emergency stops, lockouts, tagouts procedure. So ये सारा कुछ जो मशीन से रिलेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग्स है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है? सो हमने इमरजेंसी स्टॉप्स के बारे में, सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में पहले पढ़ा। नाउ वी शैल सी व्हाट इज दिस लॉक और टैग आउट प्रोसीजर, जब भी हम आगे देखेंगे, और व्हाट आर दीज और इसका प्रोसीजर क्या है। सो एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई potential hazards and how to report unsafe conditions to the supervisor, ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। So maintenance and inspection, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद अ मशीन, ठीक है? अब आप ऐसा तो नहीं है कि अगर उसकी लाइफ टाइम 25 साल है तो 25 साल के दौरान आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी। मेंटेनेंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? अच्छा, मेंटेनेंस के साथ इंस्पेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें बेसिकली एक साथ चलती हैं, ठीक है? सो वी नॉर्मली इंस्पेक्ट द मशीन्स एंड इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम तो हम उसको फिर उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। ओके, मेंटेनेंस नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन मेंटेनेंस नॉर्मली आपके जो है वो it could be of different types, yeah, sorry, it could be of different levels. For example, it could be yearly or monthly or 6 monthly or weekly or daily भी हो सकती है, depending upon the level of the machines, ठीक है? कितनी हसास है आपकी मशीनरी की वर्किंग, ओके? सो उस पर ये डिपेंड करती है। So, regular maintenance can help prevent breakdowns and extend the lifespan. So, मशीन की लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने के लिए और ब्रेकडाउन्स को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट। Maintenance and inspection should be conducted according to the manufacturer's instructions and industry standards. So there are two things. एक तो जो मशीन का manufacturer, it has given some instructions. For example, it asks you to check or maintenance, for maintenance it asks you to go bi-monthly, okay? So हर 2 months बाद आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है। बट द इंडस्ट्री वेयर इट इज़ वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर हो रही है उसका स्टैंडर्ड में भी ये हो कि हर मशीन को आपने बाय ऑल मींस एक मंथ में एक बार चेक करना है। सो इन दोनों में से जो प्रायोरिटी हो उसको आपने फॉलो करना होगा, ओके?
सो दिस मीन्स कि हम इस केस में 1 मंथ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 मंथ जो है उसके साथ जाएंगे. Okay, so if any issues or malfunctions are found during inspection, the machine should be taken out of service and repaired before use. Okay, so koi malfunction, any issues are found during the inspection, what you should do, taken out, it should be serviced and repaired before we use it further. Employees should establish a maintenance and inspection schedule for machines and keep record of all the maintenance and repair performed. So ये बड़ा ज़रूरी है records रखना. If you are performing maintenance, you should have the record. इसके basically कुछ basic checks बने हुए होते हैं. ठीक है, कुछ चेक मार्क्स होते हैं जो कि किसी मशीन ने मीट करने होते हैं. अगर उसमें से कोई एक भी चेक मार्क मीट ना हो, तो दिस मीन्स कि ड्यूरिंग मेंटेनेंस देयर वाज समथिंग रॉन्ग एंड वी शुड go for inspection and then repairing. Okay. Okay, so what is lockout and tagout? During maintenance या repairing, आपकी डेफिनेटली मशीन वर्क तो कर नहीं रही होगी. ठीक है, सो लॉक आउट एंड टैग आउट इज अ सेफ्टी प्रोसीजर दैट प्रिवेंट्स द एक्सीडेंटल स्टार्टअप ऑफ मशीन. फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसमें से कुछ कंपोनेंट आपने ओपन करके यहाँ से निकाला हुआ है. ओके, नाउ द मशीन इज कैपेबल ऑफ वर्किंग विदाउट दिस कंपोनेंट. ये कंपोनेंट जहाँ पर ना भी हो तो इट कुड वर्क. ठीक है, मतलब इट कुड ऑपरेट, बट दैट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर द मशीन इटसेल्फ या फिर जो उसे ऑपरेट करेगा. ठीक है, एंड बाय एनी मींस जो मेंटेनेंस के लिए कंपोनेंट गया है मशीन का, वो पूरी मशीन नहीं लेकर जानी थी, जस्ट उस कंपोनेंट को मेंटेनेंस करनी थी उसकी. ठीक है, उसको रिपेयर करना था. सो वो एक एक पर्सन तो वो ले गया, बट लेट्स अज्यूम कि जो सेकंड पर्सन है उसको इस बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी कि ये कंपोनेंट इसमें मौजूद नहीं है, एंड ही और शी कम्स हियर एंड ही स्टार्ट्स दिस मशीन. ठीक है, अब इससे कुछ सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं विच आर नॉट गुड. ठीक है, तो फॉर प्रिवेंशन व्हाट डू वी either लॉक आउट द मशीन और टैग आउट. दिस मीन्स कि यहाँ पर कुछ टैग्स हम मार्क कर देते हैं. ठीक है, और इस तरह लॉक लगा देते हैं, और इसी तरह डू नॉट ऑपरेट ये चीज़ें यहाँ मेंशन कर देते हैं, मशीन के साथ ये टैग्स मेंशन कर देते हैं. ठीक है, जिससे क्लियर इंडिकेशन हो जाती है कि वी शुड नॉट ऑपरेट द मशीन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम. ओके, उसकी रीज़न कोई भी हो सकता है. It involves isolating the machine from its energy sources, for example, electrical, hydraulic, pneumatic, and placing a lock or a tag on the energy isolating device to indicate that it should not be turned on. Okay, okay. Lockout and tagout procedures should be clearly communicated to all workers and followed strictly. Okay, so वो जो lockout tagout का procedure है कि किस तरह हमने एनर्जी सोर्स जो है, जो आइदर इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, ठीक है, उसको कैसे रिमूव करना है मशीन के साथ से. ओके, और इसके अलावा कैसे उस पर टैगिंग करनी है. ओके, सो लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड दिस एर्गोनॉमिक डिजाइन. ठीक है, कि मशीन में किस तरह एर्गोनॉमिक डिजाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर एर्गोनॉमिक डिजाइन सही ना हो. ओके, सो ergonomic design involves designing machines that are comfortable and safe for workers to use. Okay, so this is very important. A machine is working very well. Okay, we know that it is fulfilling its purpose. That is good, but it is not safe for workers to use or even comfortable for workers to use. If that is the problem, this means that there is a chance uh, maybe your work output or the full potential of the machine may not be utilized due to this factor. Okay, due to the
absence of comfortability in the machine. Okay, so that mostly plays an important role, right? Similarly, ergonomic design can reduce the risk of musculoskeletal disorders, which we had discussed in the first two or three lectures, such as back pain and carpal tunnel syndrome. So, is anyone familiar with this? You already know about the back pain, but is anyone familiar with the carpal tunnel syndrome? Anyone? Do you have an idea what is carpal tunnel syndrome? G. Is anyone with me? Let me check. G. Is anyone with me? आप सब सो रहे हैं. What is happening? Yes, sir. Okay. What is carpal tunnel syndrome? Okay. Let me tell you. If you use the mouse, laptop mouse, or in general, you work a lot on laptop like me. मेरा बेसिक ज़्यादा काम लैपटॉप पर ही होता है, ठीक है. सो आई हैव दिस प्रॉब्लम विद माई हैंड कि मेरा जो कलाई का जो हाथ का इंटरनल पार्ट है कलाई का, सो इट हैज़ अ पेन जो अभी काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है. मतलब इट कम्स एंड गोज. इफ आई यूज द माउस और लैपटॉप अलॉट, इट कम्स बैक, राइट. सो ये कलाई में, और ये आप सर्च कीजिएगा दिस कार्पल टनल सिंड्रोम. इट इज़ वेरी कॉमन. इसी तरह मोबाइल, इफ यू आर यूजिंग मोबाइल इन एक्सेस, दैट मे ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. ओके. सो इसकी रीज़न विच आई अंडरस्टूड, it was due to my home PC setup, laptop setup. The table is quite high, but my hand is quite low. So इसकी वजह से the shoulder and the whole basically arm is in light pain sometimes, and sometimes it gets a lot worse. Even now, I have that issue with my hand. So this is called carpal tunnel syndrome. You should search it. It is very common. Okay, so ergonomic design should consider factors such as the height and reach of control. So it also very important thing. Height and reach of control. That at the given moment, for example, this worker here, do this worker need to sit, stand again and again to reach any controls, or just by sitting he can easily reach the control? For example, here, that also plays an important role. For example, if something goes wrong, okay, and he has to first sit, he will have to first get a little back, then he will have to stand and then reach some control. That may, that time dilation may cause some problem, right? So the placement of displays and the needs of adjustable features, जे सारा कुछ, it should all be accessible to that worker, easily accessible. Safety culture. A safety culture is a workplace सर environment. मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी, बोलें प्लीज. सर वो मैं एक साइड में सर लेटा हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरे इधर शोल्डर में सर एक मसल है सर, उसमें सर पेन आ गया सर, उसका क्या करें? ये तो अब आपका वो प्रॉब्लम जो है आपको ही पता होगा. तो इसके लिए यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, और कोई मसाज वगैरह सर करवा वो लें. नींद में तो बंदा कॉन्शियस नहीं रहता, एक साइड हो गया. हाँ हाँ. सो सो इसके लिए एक पिल है, वो काफ़ी अच्छी है. ये इससे, इट इज़ कॉल्ड, हमारी देसी लैंग्वेज में रग उतरना भी कहते हैं. सो हाँ, ठीक है सर. यूट्रॉन इज़ द नेम ऑफ द पिल. वो आप अफ्तारी के बाद ले लीजिएगा. इट इज़ वेरी गुड. इंशाल्लाह. ओके. ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स.
Okay, so safety culture is a workplace environment in which safety is top priority. Okay, normally in Pakistan this is not the case. मैं आपको हमेशा ही कहता रहता हूँ. In Pakistan, everything is in opposite direction, right? So the workplace environment still there is some priority level to safety culture, but it is not of our top priority. A lot of examples are there. Machines 3 3 4 4 साल से ऑपरेट कर रही हैं, they have not been maintained or inspected. Okay, similarly the workers, they don't know about the safety protocols of the places where they are working. uh, ये आप बार बार देखेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कुछ सीमेंट लेकर जाने वाले मिस्त्री मजदूर हैं, ठीक है, सो हाउ दे आर टेकिंग दैट ह्यूज मैस ऑफ सीमेंट, वो आप लोग देखते रहते होंगे, ठीक है. मिस्त्री मजदूर ने वो किसी किस्म के कोई खास मास्क नहीं पहनते, बट कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा करम है उन पर कि दे आर सर्वाइविंग फॉर द लास्ट 20 30 50 years. So normally at a good place safety culture is very important. बाहर ममालिक में it is of top priority. Okay, a safety culture involves leadership commitment, employee involvement, and continuous improvement. Okay, so a leadership commitment is very important because that is the first thing that drives the safety culture. Then employee involvement, definitely an employee should be involved in that safety culture as well, because he or she, that employee, is basically the you can say the thing that will derive the safety culture. And continuous improvement, again, you have established some safety protocols, but usko definitely there will always be some place for continuous improvement, right? So a safety culture can reduce accidents and injuries. Number one, it can improve the productivity and increase employee morale. Okay, so three things are all of these things are better for us. Legal requirements. There are legal requirements for the design and safeguarding of machines. So, normally, in a lot of cases, in mostly all cases, you cannot operate the machine legally. You cannot legally operate the machine without the safeguarding and design that supports the safety of machine. Okay. Legal requirements may include, again, ये आपको मैंने बार बार बताया था, occupational safety and health administration regulations. There are some standards from this organization, okay, जिसको हमने फॉलो करना होगा. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, एंड लोकल कोड्स एंड रेगुलेशन, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री देयर कुड बी सम लोकल थिंग्स एज वेल. ओके, so employers must ensure that machines are designed, maintained, and operated in compliance with these standards. Okay, so employers को ये चीज make sure करनी चाहिए. ये direct hit आती है employer पर. If there is something wrong, so employee से भी पूछा जाएगा, ठीक है. But employer को इसका ज्यादा खतरा है, because there is a chance कि उस organization को ही अगर कोई severe किस्म का accident होता है, तो मे बी दैट ऑर्गेनाइजेशन, उससे लाइसेंस ही छीन लिया जाए. दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट वर्क इन द फ्यूचर, देयर इज अ चांस. compliance with legal requirements can prevent fines and legal liability. Again, फाइन्स भी हो सकते हैं और ये बात उस कंपनी के खत्म होने तक जा सकती है. consequences of machine accidents. Okay, what are the consequences? अगर machine accidents हो रहे हैं, what will happen, what are the chances to things to happen? Machine accidents can have serious consequences for workers and employers both. Consequences may include physical injuries, lost productivity, legal liability. Okay. So machine, ये अभी मैंने आपको explain किया कि what could happen. Machine accidents can also have a negative impact on employee morale
एंड वर्कप्लेस कल्चर, इन दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मे बी दैट एम्प्लॉय जिसके प्रॉब्लम हुआ है ये, उसको ताहयात किसी साइट से बैन कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही और शी वॉज वर्किंग इन सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है, सो मे बी उसको वहां से बैन कर दिया जाए, दैट एम्प्लॉय कुड नॉट वर्क इन एनी प्लेस, ऐसा भी होता है। ओके, so employers may also face legal consequences if they are found to be in the violation of safety regulations. Again, same thing could happen for the employers as well. Agar that accident happened by the employee, but back end pay it was found it was due to the employers. So maybe uh, unko that employer will have to face some legal consequences as well. Okay, some case studies. So, 2010, BP's oil spill. Okay, so this was some place where the oil spill happened in 2010. Okay, so the 2010 BP oil spill in the Gulf of Mexico was caused by a blowout preventer failure on a drilling rig. Okay, so this blowout preventer जो कि फेल हो चुका था at the rig, it caused oil spill. The failure was attributed to the lack of proper maintenance. Proper maintenance नहीं हुई इस blowout preventer की, and testing भी नहीं हुई equipment की, इसी equipment की. Okay. The spill resulted in 11 deaths. That is very huge number. Significant environmental damage. Definitely आपके जो drilling rig है, it is most probably in the sea, or that oil spill caused environmental damage and billions of dollars in fines and cleanup costs. Okay, so that also was bared by the company, and this problem was definitely due to the company's lack of proper maintenance. Then 2014, we have a case study of GM ignition switch recall. So 2014 GM ignition switch recall involved a faulty ignition switches, okay, that could cause engine shutdown and loss of power steering and brakes. The recall was attributed to the design flaw and failure to recognize and address the problem. The recall resulted in at least 124 deaths. Okay, so this is a very huge number, and billions of dollars in fine and compensation. So this was a nightmare for the company. Okay, so this is the summary of this lecture. Machine related injuries can be severe and fatal, uh, but they can be prevented with proper safety practices, designing, and safeguards. Okay, so employers have a legal responsibility to provide a safe workplace, including ensuring machines are safe to operate. Okay, safety practices such as lockout, tagout procedures, and ergonomic considerations can help prevent injuries. Machine design should incorporate safety features such as guards and emergency stops. Okay. Uh, Employers should also establish a safety culture that prioritizes machine safety. Okay, so this all of this was this lecture. Okay, okay, I'm gonna stop the lecture here. G, okay. Just wait.